हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द टेक टिप्स पॉडकास्ट। आपने सादा पे का नाम तो यकीनन सुना होगा। इट इज़ probably one of the most famous fintech apps in Pakistan right now. And today we have Basit Masood with us, who's leading the product design team at SadaPay. In this episode, we talk about a lot of things, including his background as a designer, his experience in forming the design team at SadaPay, and his advice for anybody who's looking for growth as a product designer. So let's start. Assalamu alaikum, Basit. Welcome to the podcast. Walaikum salam, Raza. Apart from the fact that you work at SadaPay, you lead the design team at SadaPay, that आपका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस का है, that much I know. तो let's start from there. आप डिज़ाइनर कैसे बने? Okay. So I think back in university, I was involved in multiple competitions. Usme I got a bit of exposure to graphic design, and at that time, it was not decided कि मैंने designer बनना है. I was a programmer at that time. I started job at different companies. I also won different competitions. तो वो उस तरीके से exposure मिलता गया. So, but the bad part about this is actually कि in just I think 2 to 4 months, I left around 6 or 7 companies, and that was Oh, okay. so rapid. And it was because I was not able to find my passion. I was able to do my सही। job, बट हम्म, हर जगह जाके कोई ना कुछ फील होना, कुछ कोई ना कुछ मसला नज़र आना. इट वाज लाइक inside you that you were not able to adapt over there. हम्म, So I used to ask a lot of questions, and that has been a habit since day one. Okay, why are we building this, and हम्म, why are we building in this way, and who are हम्म, we building this? So usually, as a like when you're working as a programmer in a small company, you get this answer, bro. Just do the job, just do the code, and don't ask a lot of हम्म, questions. yeah, So at that time I realized कि भाई I don't think कि ये चल रहा है. The programming stuff is not going to work for me. I have to look for something else. And I was looking for, I did not know about UI UX वगैरह. I was just looking for a place, a role जहाँ पर I am the one who is involved in decision making. कि how to right. build things, the how part, the what part, and ये सब कुछ ना, before you're jumping into the implementation, उससे पहले के जितना का सारा phase, I wanted to be a part with that phase. And I came to know, I think, through Interaction Design Foundation, okay, there is this field called UI UX, and I got bombarded with a list of courses over there क्योंकि उनके पास Yeah. काफी ज्यादा courses हैं. And I was so हम्म, confused कि यार ये सब कुछ UI UX में आता है तो इतना कुछ एक बंदा कैसे करता है. हम्म, And I was so confused. But one of the thing that actually made me happy was Interaction Design Foundation की website. Its experience was so engaging क्योंकि जब आप हम्म, उसके साथ when you start it ना, when you start your journey हम्म, with that website, they हम्म, start engaging again and again with push notifications, emails, and they start with very small steps कि पहले इसको ना बंदे को basics दिखाओ, how what is a UI UX या फिर how to become a designer, ये सब कुछ. And उस तरीके से वो हम्म, आगे लेके जा रहे थे. आई थिंक दे ऑल्सो हैव दिस कैरियर लैडर्स कि पहले ये सीखना है, फिर ये, फिर ये, फिर हम्म, ये. तो दैट एक्चुअली इम्प्रेस्ड me and inspired me at that time. So I started to apply to UI UX jobs, although I did not have any हम्म, experience वगैरह. And I okay. got my first UI UX job at Vizdec. And at that place I learned कि UI UX होता क्या है, like visuals सही। कहाँ बनते हैं, Photoshop पे बनते हैं, Illustrator पे बनते हैं, Figma पे बनते हैं. I still remember we used to slice the websites and ship them to Yeah, developers. yeah, So that's where I basically got exposed. But I think still I was not happy. उसकी रीज़न ये थी कि we were so focused on the UI part, but we were not focused on the, again, those questions वाला part जहाँ पे हाँ, I was more interested. And हम्म, but at that time I did came to know कि भाई UI UX क्या है and what I have to do. सही। And I wanted to become an experienced designer. And at that time I started to apply again. I think I applied in
30 or 40 companies at that time. Oh my God. I in the end got accepted at Venturedive, and Nice. that's where basically my career actually started, I would say, with product design. सही 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 क्योंकि उससे पहले आमतौर पे ये होता है कि आपके दिमाग में ये होता है कि वेब डिज़ाइन का एक पार्ट है लाइक बहुत सारे लोगों के लिए ये होता है कि जस्ट वेब डिज़ाइन की वेबसाइट्स बना रहे हैं और बाकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो वेंचर डाइव पे फिर आपने बाकायदा यूआई यूएक्स पे काम शुरू किया Yep. एंड देर लाइक आपने उस टाइम पे भी आई गेस फिनटेक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया। Yes, my first project was actually Expense. It's a UAE startup, हम्म neobank, and हम्म that was my first project. And I'm very happy कि वो मेरा एक project था, क्योंकि वो जो project था वो बहुत challenging project था. We had a very tight deadline, and हम हम्म उस phase में से जब गुजर रहे थे, तब उस वक्त तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था कि whatever is happening with me, it's bad. But believe me, when you're going through a challenge, when you're going through हम्म, a lot of hurdles, after going through those hurdles, you realize कि आपने कितना हम्म, कुछ सीखा है. And बिल्कुल बिल्कुल। I had very challenging head of design, and very challenging head product manager as well. I think your product manager was also Ali Raza and mine as well. या But they kept pushing us कि भाई नहीं करना है और इसको बेहतर करना है. It was not about quantity, it was actually about quality. And that in 3 months, I think what we delivered was a really 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 good product. And उसमें जब डिलीवर करने के बाद we realized it कि हमने क्या कुछ कर दिया है. And that या was really really a great experience. From Venture Dive to SadaPay, how was the journey like, and like what's the background of that? Venturdive was great, but the problem was with me कि I wanted something कि जिस पे मैं ना खुद बैठ कर काम करूं, लाइक जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं, फ्रेमवर्क्स पढ़े हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे प्लेग्राउंड मिले जहाँ पे मैं खुद अप्लाई कर सकूं, खुद सीख सकूं. Hmm. क्योंकि Hmm. आई हैड दिस हैबिट के I still used to challenge a lot of theories and frameworks. Okay, there is this framework. Yes, I do agree Hmm. with you, but does that work for me for this problem or not? Hmm. उसको Hmm. मैं जब तक करूंगा नहीं, तब तक मुझे समझ नहीं आती कि वाकई इट इज बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट. सो व्हेन Right. आई वर्कड एट एक्सपेंस, तो जब मुझे एक्सपेंस का एक्सपोजर मिला, आई वाज I started to think कि why Pakistan does not have a neo bank, why Pakistan does not have a digital bank. ऐसा Hmm. ऐसी क्या चीज़ है जो हमें रोक रही है? There's a lot of opportunity over here. There's a lot of gap. Hmm. And at that time, I started to search on Google के is there any digital wallet in Pakistan या वगैरह ना. So I remember Asad, our head of marketing, was testing some ads on Facebook, social media. उस वक्त we did not have lot. I don't even think we had an application at that time. Hmm. So we were just testing few ads. तो मुझे वो ad नज़र आया और मैंने LinkedIn पे सर्च किया. I got Brandon and I just messaged him कि hey, are you looking for a product designer? And he said no. Okay. And I said Okay. that and the good thing about him was that he said no, but he said that I can still meet with you. So that was an Nice. opportunity for me to sell Yeah. my side. Yeah, Yeah. I am someone who can actually add value. Hmm. And when he interviewed me, he really liked the work that I had done at that time. And that was the turning point actually. And I was offered the job the next day. ओके, वेरी वेरी अनयूजुअल, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस Yes. के मतलब कोई ओपनिंग नहीं थी और No. डायरेक्टली आपने कांटेक्ट किया है, वाह। ओके। Yep. अच्छा, ये वाली चीज़ आई थिंक अ लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स नीड टू लर्न इंक्लूडिंग मी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा फियर होता है इन अप्रोचिंग अदर पीपल यूँ बिल्कुल डायरेक्टली, तो वो एक बैरियर होता है। यू वर द फर्स्ट डिज़ाइनर एट सादा पे, राइट? Yeah. First in-house designer. Exactly. और उससे पहले वो बाहर ऑब्वियसली बाहर की किसी कंपनी के साथ दे मस्ट हैव बीन वर्किंग। Yeah, we had, I think, उससे पहले when you have when you have an idea ना, तो you usually get that idea on the board. ठीक है, तो सही है। उस वक्त couple of freelancers से भी काम करवाया था, different काम उन लोगों ने. And हुँ। then we also had an agency, फिर उससे थोड़ा बहुत iterations करवाते रहते, तो that's how it's been going on. लेकिन
इस पॉइंट पे मेरे ख्याल से सादा पे का मार्केट में उस तरह से जैसे नाम नहीं था, वो प्रेजेंस उस तरह से नहीं थी, जो ऑब्वियसली क्योंकि प्रोडक्ट अभी लॉन्च होने में टाइम था, लाइक दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग, राइट? यस, इट्स बैक 2020 का टाइम, एंड ऑफ अच्छा, कह लो या कोविड समथिंग, दिसंबर 2020। ठीक है। एंड देन यू जॉइन सादा पे और वहाँ से आपका एक सादा पे के साथ जो जर्नी है वहाँ से स्टार्ट होता है। कैसा रहा आपका सफ़र सादा पे के साथ? Well, it has been exciting, like a roller coaster, honestly. Because I still remember from where we started. We had around 20, 30 employees. I was the first product designer. We had just one product manager, एक दो या तीन developers थे. ज़्यादा बड़ी team नहीं थी. And राइट। we were super excited at that time क्योंकि जो जिस आइडिया पे हम सोच रहे थे, काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है जब आप स्टार्टअप शुरू हो रहा होता है. And at that time we had a shared office space, और वो लॉयर्स के साथ शेयर थी, एंड वी जस्ट हैड वन और टू रूम्स. और जब हमारे एम्प्लॉय सारे आ जाते थे ऑफिस में, वी यूज टू सिट एट ऑन द ग्राउंड सारे, और ओह वहाँ से माय बैठ गॉड, के काम ओके। करते थे. But now, fast इंटरेस्टिंग। forward to this time, we have around three offices: Karachi, Lahore, Islamabad. So ऑलराइट। it's been a journey from 20-30 employees to, I think we reached at a point 300, 350, and now we reduced it as well to 50 or 300 something. स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, जब बिल्कुल टीम आपकी जो है लाइक देयर इज अ कपल ऑफ पीपल, ठीक है, उसके अंदर थोड़े से डेवलपर्स हैं, आप यू आर द मेन डिजाइनर। हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि हाउ डिड द प्रोडक्ट टीम ग्रो, और उसकी सॉर्ट ऑफ इफ यू कैन लाइक टेल अस के व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट टीम एट सादा पे मे बी। So at that time, कोई खास स्ट्रक्चर नहीं था. वी वर जस्ट अगेन एज अ छोटे मोटे स्टार्टअप की तरह, फ्यू डेवलपर्स, पीएम, डिज़ाइनर, एंड सब मिल बैठ के काम कर रहे हैं. एंड एवरीबॉडी वाज सो इजी टू अप्रोच. जस्ट टेक्स्ट देम एंड दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. जब वी स्टार्टेड हायरिंग, रैपिड हायरिंग, तो काफ़ी जब हमें लाइसेंस मिला फॉर क्या कहते हैं, फॉर द फर्स्ट बेटा टेस्टिंग, आई थिंक इट वाज अराउंड 10,000 यूजर्स के लिए जब हम रिलीज कर सकते ऑलराइट। थे. सो वी कुड हैव ऑनबोर्डेड, या वी डिड. सो उस वक्त we started hiring, and that was, I think, after an year or so. So उस वक्त ओके। जब we started rapidly hiring, तो when the team grew, उस वक्त we started making this structure, and we converted that into squads. ठीक है, फिर पहले छोटे छोटे स्क्वाड्स बनाए. मनी का स्क्वाड हो गया, ठीक है, फिर आपका एंगेजमेंट का स्क्वाड हो गया, फिर ऑनबोर्डिंग का डिफरेंट छोटे छोटे स्क्वाड बनाए. फिर वो टीम्स बड़ी होती गई स्क्वाड्स के अंदर भी. फिर उन स्क्वाड्स को भी तोड़ के आगे और बड़े डिफरेंट स्क्वाड्स बनाते गए. सो व्हेन वी हैड मल्टीपल स्क्वाड्स, तो वी कनेक्टेड देम विद इन ट्राइब्स एज वेल. आई थिंक इट्स द सेम मॉडल एज what Spotify and major other companies also follow. So that's what we are also following, and that's how we are structured right now. तो जब आप स्क्वाड कहते हैं तो इट मीन्स कि एक स्क्वाड जो है या एक ग्रुप ऑफ डिज़ाइनर्स जो हैं वो एक वर्टिकल पे काम करते हैं, या दूसरा स्क्वाड दूसरे वर्टिकल पे काम करता है, हाउ डज दैट वर्क? It's not exactly पूरे का पूरा vertical. ओके। It's more logical rather than complete vertical. कह लें ऑलराइट। कि there is a squad which is only responsible for growth. So अब वो ग्रोथ का अगर सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है. हाँ, ओके। And then in a squad, you have a PM, you have a designer, you have front end engineer, back end engineer. We majorly have full stack engineers, but still there's specialties. Then we have marketing folks, we have CX का एक ना एक आधा बंदा, so that there is a layer to connect with the direct with the users as well. So सही है। that's how it is. Basically हर एक टीम में से एक एक बंदा ये आप उठाते हैं और आप उसको ना एक टीम बना देते हैं. तो that team is सही है। responsible for a logical aspect of the product. करंटली सादा पे कितने डिज़ाइनर्स होंगे लाइक अभी टीम के अंदर, लाइक हाउ लार्ज इज द डिज़ाइन टीम राइट नाउ? So we have visual designers जिनकी separate team है, which are more like creative designers. I think उसमें भी we have 5-6 designers. ठीक है। And then in my team, I have around similar um, 6-7 designers. I don't remember the exact number. I'm sorry about ऑलराइट। that. नो नो दैट्स फाइन। सही सही सही। तो द रीज़न फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन इज़ कि आपका जो जर्नी रहा है फ्रॉम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर टू द लीडरशिप पोजीशन दैट यू आर इन राइट नाउ, एक लीड डिज़ाइनर क्या करता है? मेरे ज़हन में लाइक इफ़ आई एम अ लेमैन,
तो मैं ये सोचूंगा कि यार प्रोडक्ट मैनेजर का भी वही काम नहीं है जो लीड डिज़ाइनर का है, लाइक आर हाउ आर द डिफरेंट रोल्स, एग्जैक्टली क्या तो करता है लीड डिज़ाइनर? ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी कि ओके। किसी कंपनी में लीड प्रोडक्ट डिज़ाइनर के डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, किसी हम्म। में डिफरेंट हो सकते हैं, बट ओवर हेयर अब यहाँ पर मेरे लिए स्पेशली थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज गाइज जो एज ए मिड लेवल प्रोडक्ट डिज़ाइनर हायर हुआ था, और हम्म। आई वेंट टू सीनियर, सीनियर टू लीड, एंड नाउ आई एम हम्म। बेसिकली लीडिंग whole product design team at SadaPay, and हम्म। I'm the one who's responsible for the whole design department actually. So सही है। mere liye it's a bit different. I am the one actually who is sitting on top of the product right now. हम्म। Like all the tribes, all the squads, I'm responsible for that. I'm responsible for my team. I'm responsible for the product design that's going out to the users. I'm responsible for the user research, for the data-driven design decisions, and सब कुछ. But probably ऐसे बाकी companies में नहीं होता होगा कि सही। जैसे मैंने कहा, it depends, it varies from company to company and scenario actually. सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा है सादा पे की ऐप डिज़ाइन करने में? लाइक आई नो कि अगेन रिसेंटली बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए, द ऐप हैज़ ग्रोन अ लॉट फ्रॉम इट्स इनिशियल डेज, बट लाइक सबसे चैलेंजिंग पार्ट अभी तक का क्या रहा है? I think it's about our DNA. It's about what we were trying to achieve. क्योंकि हम्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं जब पहले लाइक द लास्ट कंपनी आई वाज वर्किंग एट, वहाँ पे मेरा सिर्फ एम ये था, आई डिड गेट एट दैट टाइम a lot of different offers from other companies as well, but हालांकि they were much better, but I ignored and I rejected those क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ ये, I was interested in fintech and I was also हम्म। interested in converting traditional banking into modern banking and राइट। simplifying the राइट। experience. And it's not that easy to simplify experience when you're talking about fintech. Because हम्म। in fintech, you have a lot of third parties. You have dependencies, you have limitations, you have compliance, you have risk, you have a lot of हम्म। different elements involved. So it's हम्म। not that easy to design. And I'm very glad that we had a very, very bright leadership and हम्म। जिन्होंने बहुत support और help की उस वक्त, and they challenged us to simplify as much as you can. यूजर को फ्रिक्शन राइट। फील नहीं होनी चाहिए एट दैट हम्म। टाइम. इफ यू रिमेंबर उस वक्त के ट्रेडिशनल बैंकिंग, आज से लाइक 3-4 years बैक, हम्म। traditional banking applications were in this way: if you click on send money, you have to enter amount, you have to select the bank, you have to select the बल्कि you first have to add the recipient as well. नाम दो, या। निक नेम दो, उसका नंबर ऐड या। करो, अकाउंट नंबर, फिर बाद में उसको सेलेक्ट करो, फिर उसका हम्म। जो है ना आगे ओटीपी अलग से आता था, आपके ईमेल पे ओटीपी अलग से, देयर वर लॉट ऑफ या। डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन इन द होल फ्लो. एग्जैक्टली। एंड वो काफ़ी लंबा था एंड इट देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, सो वी हैड टू थिंक अगेन एंड अगेन कि यार इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. एंड the amazing part about this is we are still trying to simplify as much as we can. If you are following the application, we recently revamped the transfer flow again. अब उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई राइट। और स्मार्ट बना दिया है. यू जस्ट हम्म। इंटर द नेम या फिर नंबर, वट एवर यू हैव इन योर माइंड फ़ौरन से, हम्म। एंड दैट फील्ड विल ऑटोमेटिकली गेट यू कि आपने अब करना क्या चाह रहे हो. आप अली को ढूंढना नाइस। चाह रहे हो, या फिर बैंक को ओके। ढूंढना चाह रहे हो, या फिर जो है अकाउंट नंबर जो है ये ढूंढना चाह रहे हो, एंड अकाउंट नंबर भी ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा. You on one just click, you go to confirmation screen, and that's it. So I think the most challenging part was to remove the traditional banking ki friction. कि राइट। you have unnecessary things and make the हम्म। design so intuitive that you know what the user want. It's not राइट। that ये यूजर के सामने आप जो है ना collection of things रख दो, आप हम्म। और आप सारी सारी चीजें उसके सामने रख दो, and now he has to choose कि मैंने क्या करना है. हम्म। So that's a good that's a very good case for a smart user. But in banking, राइट। you know that there are a lot of different kind of user personas. आप हम्म। बच्चे यूज कर रहे हैं, बूढ़े यूज कर रहे हैं, सारे यूज कर रहे हैं, तो करियाना स्टोर वाले यूज कर रहे हैं, ढाबे वाले यूज कर रहे हम्म। हैं. सो you cannot teach everyone, so you have to understand के you have to make the design so intuitive that it is हम्म। self explanatory. और लोगों को आप the application needs to understand के यूजर क्या चाहता है, एंड वो हम्म। यूजर को लेके चल रहे हो उसके मिशन तक. सो इट्स नॉट लाइक सही है। कि यूजर जो है आकर खुद ढूंढ रहा हो कि मैंने क्या करना है यहाँ पे आके. अब यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, आई रिसेंटली वेंट टू एस्टोनिया और वहाँ जाके आई चेंज माय नंबर,
तो अब मुझे मैं जो बैंक यूज़ कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, उसमें मैं कोई और रेसिपिएंट नहीं ऐड कर सकता बिकॉज़ आई कांट रिसीव एन ओटीपी। और ओटीपी भी सिर्फ़ ईमेल पे नहीं आना, वो नंबर पे भी आना है। तो ईमेल पे आ जाएगा बट लाइक आई कांट यूज़ माय नंबर देयर। तो लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। और ये वाली लाइक फिनटेक की डिस्कशन आई रिमेंबर कि जब सादा पे लॉन्च्ड, तो वो सडनली वो दैट स्पेस इन पाकिस्तान बिकेम सो एक्टिव, क्योंकि उसके बाद लाइक देयर वर सो मेनी स्टार्टअप्स, इवन बैंक्स लाइक स्टार्टेड लाइक टुक एन इनिशिएटिव इन लाइक दोबारा रीडिजाइन स्टार्ट हो गए ऐप्स के, और We लाइक देयर वाज basically अ set ह्यूज a ग्रोथ। standard. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं पूछना ये चाहूँगा कि ये वाली सेंस कैसे पैदा होती है, लाइक मैं अगर एक डिज़ाइनर हूँ जो फिनटेक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, स्पेशली लाइक गिवन के इतनी टाइट डेडलाइंस होती हैं यूजली, वेदर यूर वर्किंग इन अ प्रोडक्ट कंपनी, आप इन क्या कहते हैं सर्विस मॉडल में है, प्रोडक्ट मॉडल में है, यू डोंट हैव लाइक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च इन डेप्थ इन डिटेल कि अच्छा एक फीचर है जो हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो मैं बहुत तसल्ली से उसके ऊपर जाके सोचूं, उस पर रिसर्च करूं, दूसरी एप्स जो हैं उन्हें देखूं। ये थिंकिंग और ये सेंस डेवलप करना कि व्हेन यूर, और फिर ऑब्वियसली इट गोज बियॉन्ड फिनटेक, इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू एज अ डिजाइनर, वो कैसे डेवलप होती है? मैं इसको ना दो तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा, राइट नाउ के सिनेरियो में भी, और क्योंकि दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट माय टीममेट्स स्टार्टेड टू आस्क व्हेन आई हायर्ड देम, हम्म। कि व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन डू यू एक्चुअली वांट, तो आपको चाहिए क्या? या तो जी। आई थिंक, मुझे लगता है, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, आई माइट बी रॉन्ग, बट प्रोडक्ट डिजाइनर्स आर वेरी क्रिएटिव पीपल, ठीक है? वो लोग हैं जिनको आप जितना चैलेंज करोगे, ठीक है, हम्म। वो उतना बेहतर तरीके से चीज़ें निकाल सकते हैं। लाइक, इफ लाइक यू नो दैट के जब एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन बना रहा होता है एंड द क्लाइंट सेज आई नीड द लोगो बिगर एंड बिगर एंड बिगर, he या keeps या making them until the client is satisfied and he himself is also satisfied, means he can एग्जैक्टली। still do it. You just have to हम्म। challenge them कि भाई नहीं या समझ आ रही आपकी चीज़ जो बनी है, we हम्म। can't understand it. And one of the other aspect is that you have to do testing, test with random people and test it quickly, rapidly, rapid testing karo. I remember ke when we started, इन द स्टार्ट, लाइक जब ना हमने इमोजीज अडॉप्ट किए, सो एवरीवन वाज हम्म। लाइक कि भाई बैंकिंग की एप्लीकेशन में इमोजीज नहीं होते, यू कांट यूज इट। आज तो लाइक इट्स बियॉन्ड, एवरी इन एवरी एप्लीकेशन यू विल सी इमोजी सपोर्ट, और आजकल तो इट्स वे टू मॉडर्न, बट एट दैट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड ना, तो उसके पीछे वी ऑल्सो एज अ डिजाइनर हैड टू पुट रीजन कि इमोजी जहाँ यूज हम्म। करना उसका रीजन भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं बस प्यारा लग रहा है तो मैं डाल दूं, that's या not a very good reason. So हम्म। you have to do rapid testing. What I did at that time was that कि मैंने लोगों को अपनी screens दिखाई without an emoji and with an emoji, for like quick seconds, couple of seconds, और मैंने हटा दिया and I asked them कि आपको क्या नजर आया, आपको क्या समझ हम्म। लगी, and जो टाइटल emojis के साथ थे they remembered कि ये टाइटल में ये लिखा हुआ था, एंड जो ओके। जिनमें इंटरेस्टिंग। इमोजीज नहीं थे दे सेड दैट कि उसमें कोई टेक्स्ट था, देयर वाज समथिंग, सम टेक्स्ट रिटन, उनको नहीं याद था कि क्या टेक्स्ट था। सो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। इट्स, आई वुड से कि रैपिड टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दूसरी हम्म। चीज़ ये कि द लास्ट पार्ट जो मैंने आपको कहा था कि मैं फॉर एट दिस टाइम वो एक्सप्लेन करूंगा, आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप फॉलो क्या कर रहे हो, आपका विजन क्या है। हम्म। जैसे हमारा हम्म। विजन, वी इन आवर, इवन इन आवर नेम देयर इज सादा, इट्स सादा मींस सिंपलीफाई, सिंपलीफाई पेमेंट्स, या। ठीक है? हमारा काम है सिंपलीफिकेशन है, सो रिमूव अननेसेसरी फ्रिक्शन, रिमूव अननेसेसरी थिंग्स एंड मेक ए मॉडर्न एंड इजी एंड सीमलेस एप्लीकेशन, ठीक है? हम्म। सो जब आपने ये चीज़ें तय करके रख दी हैं, यू हैव दीज एज प्रिंसिपल्स, लाइक एज अ डीएनए, देन हम्म। आप जो है ना अपने आप को चैलेंज करते रहते हो कि यार इस चेक बॉक्स को भी मैंने टिक करना है, इसको भी टिक करना है, राइट। ये आई हैव टू डू दिस। सो व्हाट वी रिसेंटली डिड इज दैट व्हेन हमारी जब टीम बड़ी हो गई, तो वी क्रिएटेड दीज, ब्रेनस्टॉर्म दीज डिजाइन प्रिंसिपल्स, वी कॉल्ड अवर, क्या कहते हैं, सादा डिजाइन प्रिंसिपल्स। सो हमने उनको इम्बेड कर दिया अपने डिजाइन सिस्टम के अंदर भी। सो वेन एवर यू आर बेसिकली नाइस। क्रिएटिंग एनी डिजाइन, फर्स्ट गो थ्रू द लिस्ट, सी के आपने कोई हम्म। चीज़ मिस तो नहीं की। इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर सेल्फ असेसमेंट एज वेल। सादा पे जैसी कंपनी जो है, जब वो डिज़ाइनर को हायर कर रही है, या जब बासित मसूद जब किसी डिज़ाइनर को हायर करते हैं, तो व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ डिज़ाइनर? एक जूनियर डिज़ाइनर ने अप्लाई किया है और
मुझे अब क्या करना चाहिए कि सादा पे मुझे हायर करे? Well, it's a long list actually. Sorry to say, but we have very high expectations from our designers. Um, ओके। but again, it does not apply on all companies. हर company की अपनी need है. So if you are rejected in a company A, it does not mean that you are not a good designer. Maybe you're a very good designer for a company B. ठीक है? So you are not a good fit for company A. So that if you were rejected, that does not mean you were a bad designer. Number one. Number two, it also depends on the level that we are hiring. Mid level है, junior है, या senior है. For junior, the राइट। first and most thing that we look for is passion. कि how passionate that person is actually. वो अपनी field को लेके कितना serious है. So how passionate that person is, क्या वो अपने passion के साथ questions पूछ रहा है, nitty gritties में जा रहा है, depth में जा रहा है कि क्यों कर रहे हो ये चीज़ें, और लोगों को challenge करता है अपने question से या नहीं. Or I believe this should be a core part in a product designer where he question basics. So basics को question करना is not a क्या कहते हैं lame kind of a thing, but it's very necessary part for a product designer. So you have to question कि why are we building this? आपको ये इस तरीके से क्यों चाहिए? सही है? That's one thing. The second thing is in a junior product designer, what we look for is that कि at least he should be clear कि ये product design होता क्या है, ठीक है? उसके frameworks, उसके process, tools वगैरह at least उसको समझ हो. हम ये नहीं कह रहे कि यार आपके पास महारत है, you have that experience, you have worked for a couple of years. No, you at least know that okay, these are the things, and we will provide you a playground. Come over here and then experiment and learn, and we will also guide you through the whole journey. So that's for the नाइस। junior product designer. For the mid level product designer, we have bit of more expectations. थोड़ी ज़्यादा हाई हैं क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि we in our structure, our mid level product designers are responsible for their whole squad, and then senior product राइट। designers are actually responsible for the tribe level. So when you're responsible ओके। for the whole squad, ठीक है, you have to act somewhere between an engineer, PM, designer, कई दफा, ठीक है. So you have to question a lot of things. You have to be good in presentation. You have to be good in communication as well. So I think a very good problem solver. That's the number one step. कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर. आपको प्रॉब्लम दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि उस प्रॉब्लम के अंदर विजुअल्स इन्वॉल्व है. दैट कैन नॉट ऑलवेज बी ट्रू. समटाइम दैट प्रॉब्लम ओनली इंक्लूड्स डाटा, मे बी ओनली इंक्लूड्स अ प्रोसेस को ट्वीक करना, ठीक करना, सो दैट यू कैन मेक इट एफिशिएंट, ऑप्टिमाइज. तो इस तरह के भी पार्ट होते हैं. सो दीज ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर for product designers. It's not कि आप as a product designer you just have to design pretty screens. या। या। I think designing a pretty screen for us is just 30 or 40% का काम, या फिर उससे भी less for a product designer. राइट। राइट। मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि ऑब्वियसली व्हेन हायरिंग यू लुक एट पोर्टफोलियोज, व्हेन लाइक लुकिंग फॉर अ डिजाइनर एज लाइक इन इन अ हायरिंग पोजीशन, आपके जहन में क्या होता है पोर्टफोलियो देखते वक्त? नंबर वन, कि जो भी उसने किया, जो भी वो प्रेजेंट कर रहा है, वो 100% खुद क्लियर हो कि उसने ये सब कुछ क्यों बनाया था. सो राइट। ही शुड हैव अ रीजन फॉर एवरी स्मॉल थिंग. लाइक आपने अगर इवन कलर चूज किया रेड की जगह ब्लू, कोई बात नहीं. इफ यू लाइक इट, ठीक है, आप रीजन दो कि भाई इट लुक्स डिसेंट, ठीक है, इट लुक्स मिनिमल, इट लुक्स नाइस. तो इट्स एन एक्सेप्टेबल रीजन, ठीक है. सो यू राइट। हैव टू गिव अ प्रॉपर रीजन फॉर एवरी डिसीजन दैट यू हैव मेड. क्योंकि in product, when you're working, and when you're working in a very rapid, fast paced environment, your decisions need to be in this way कि you're 100% clear what you're actually doing, and you should know कि why am I doing this, and what are the benefits, pros and cons, और मैंने इस तरीके से ये क्यों किया था, और मैंने ऐसे क्यों नहीं किया. So you should have that kind of mentality, journey और vision कि आपके ब्रेन के अंदर माइंड मैप्स बने हुए हों. ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया या ये इटरेशन बनाई, ये बनाई, लेकिन उनमें से मैंने ये चूज़ की. क्यों चूज़ की, उसकी रीज़न ये थी. दिस इज़ द मोस्ट राइट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई लुक फॉर in a portfolio actually. And secondly, the visuals पे I think I just see के वो क्या बेसिक्स फॉलो कर रहा है या नहीं, लाइक स्पेसिंग, कलर्स, कंट्रास्ट वगैरह, टिपोग्राफी, स्ट्रक्चर, बिकॉज दीज आर दोज काइंड ऑफ थिंग्स. अगर किसी बंदे की थोड़ी बहुत भी वीक हो,
we can teach them, and they can also learn when they get experience and when they're working. But there are some things that are hard to teach, like attitude, personality, वो जो है ना वो बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड देन इफ यू आर ट्रू. वर्किंग इन अ वेरी फास्ट पेस प्रोडक्ट, तो उसमें तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप इन चीज़ों को फिक्स कर रहे हो. बिजनेस रिलेटेड या डाटा रिलेटेड स्किल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट आर दे इन अ डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर? क्योंकि डाटा ड्रिवन डिज़ाइन की बात होती है. क्या है डाटा ड्रिवन डिज़ाइन? लाइक इफ़ आई आस्क यू कि लाइक इन योर टीम, जब आप डाटा की बात करते हैं तो आपकी टीम में उस चीज़ को कैसे अप्रोच किया जा रहा होता है, ठीक है? या फिर लाइक अगर मैं एक जूनियर डिज़ाइनर हूँ तो मैं जब बिजनेस टर्म्स आती हैं तो इट बिकम्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग, एंड ऑल्सो फ़ौरन आपके अंदर ना एक रिलक्टेंस आ जाती है कि यार अच्छा, केपीआईज पता नहीं क्या होते हैं, ओकेआरस पता नहीं क्या होते हैं, बाकी बिजनेस टर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, प्रोडक्ट की टर्म्स हैं, वो क्या होती हैं. तो व्हेन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. व्हेन यू आर वर्किंग एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर इन अ प्रोडक्ट, ठीक है, मैं बार बार प्रोडक्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट वो क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूजर्स के हाथ में है, रन हो रही है, चल रही है. या यूजर्स या आपको डाटा फीड कर रहे हैं, वो किस तरीके से यूज करते हैं, कितने क्लिक्स दबा रहे हैं, कहाँ कहाँ वेंडर करने के बाद उस स्पेसिफिक गोल पे जा रहे हैं, ये सब कुछ वो खुद आपको दे रहे हैं. दिस इज अ गोल्ड माइन. ठीक है. इफ यू आर डिजाइनिंग एंड इफ यू आर आइटरेटिंग, ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट viewing that data, if you're not seeing कि यूजर कैसे यूज कर रहा है, यूजर आपको क्या डाटा प्रोवाइड कर रहा है, क्या चीजें आपको दे रहा है, आई थिंक यू आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो देयर कैन बी लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जैसे कि लेट्स से यू हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, आपने इस प्रॉब्लम पे काम करना है, और एज ए प्रोडक्ट डिजाइनर आपको पीएम आके कहता है कि ये देखो ये प्रॉब्लम है, और आओ इस पे बैठ के काम करते हैं, ठीक है. तो यू नीड टू आस्क के हाउ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम इज दिस, कितने यूजर्स को फेस हो रही है ये प्रॉब्लम. लेट्स से कि वो कह रहे हैं ये एज केस हो रहा है, ये इस तरह ऐप क्रैश कर जाती है, ठीक है. तो कितने यूजर्स को फेस हो रहा है, क्या पता वो सिर्फ 1.1% हो या 10% हो, अब 10% भी कितने बनते हैं यूजर्स. सो you need to understand capacity of your squad, you need to understand priorities of your squad, कि if your squad is involved in lot of things, जैसे मैंने आपको ग्रोथ की एग्जांपल दी स्क्वाड की, राइट. अगर ग्रोथ स्क्वाड जो है वो 3 प्रोडक्ट की ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो डेफिनेटली दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है ना फिक्स बैठ के करते रहें, ठीक है. सो आपको जो है ना बड़े क्रूशल डिसीजन बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे लेने पड़ते हैं उस वक़्त, कि क्या डाटा क्या कह रहा है मुझे, क्या मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नंबर 1. लेट्स से आपको डाटा कहता है येस इट्स अ हॉट बर्निंग फायर, आपने फटाफट इस पे जो है ना काम करना है. देन यू हैव टू सी के किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है. And again that data will tell you basically, and that's why it's राइट. very important to have a good relation with you and a very good and close relation with your data analytics guys, ठीक है. डीएस जो हैं वो हमारे यहाँ पे स्क्वाड्स के अंदर काम करते हैं, एंड देन डिज़ाइनर्स आर कैन easily approach them. And also it's a plus point, a bonus point, that if you know how to use Mixpanel or Tableau or other tools which actually provide data, ठीक है. डाटा भी डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, बिजनेस डाटा हो सकता है, ठीक है, आपके जो है ना बिहेवियरल डाटा हो सकता है, आपका कैसे यूज़र यूज़ कर रहा है, ठीक है. सो इट कैन बी डिफरेंट, एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज ऑन डिफरेंट फेजेस एज वेल. सो अगर आप यूआई बना रहे हैं, यू कैन ईजिली चेक योर मिक्स पैनल कि कितनी दफ़ा यूज़र ने कितनी डिफरेंट स्क्रीन्स पे क्लिक किया, कितने डिफरेंट बटन्स पे क्लिक किया, और बाद में आके यहाँ पे लैंड कर रहा है. हाउ लॉन्ग इज दैट जर्नी एक्चुअली. सो ही हिमसेल्फ दैट यूजर इज टेलिंग यू भाई मेरे साथ ये हो रहा है, एंड यू हैव टू जस्ट लिसन टू हिम. राइट. दैट्स इट. या या क्योंकि हाँ, अगेन एज अ जूनियर डिज़ाइनर काफ़ी दफ़ा दिमाग में ये होता है कि ये डाटा एनालिस्ट का काम है डाटा देखना. दिल वॉच, लाइक दिल गो थ्रू इट, हमें बता देंगे. या फिर पीएम का काम है, वो उससे गो थ्रू होंगे अलॉन्ग विद द डाटा एनालिस्ट, और फिर हमें एक टास्क असाइन होगा एंड देन विल डू इट. बट लाइक थैंक यू फॉर पुटिंग इट इनटू पर्सपेक्टिव. Some of the resources that you think can help designers grow as product designers, as UX designers? What level? Junior, mainly junior, and then we can talk about the mid level as well. Juniors के लिए I think it is like one of my habit that has been is that कि मैं जितने मर्जी वीडियोस देख लूँ, ठीक है,
मैं जितने हम्म, मर्जी आर्टिकल्स पढ़ लूँ, मुझे चीज़ें समझ नहीं आती अनलेस अनटिल मैं जब ओके, तक उनको खुद से कर ना सकूँ, ठीक है? मैं करता हूँ राइट, उनको तब जाके मुझे चीज़ें समझ आती हैं, ओह! ओके, दिस इज़ हाउ इट्स हम्म, डन। सो आई वुड ओके, से पिक एन आइडिया, ठीक है? जस्ट हम्म, सी योर सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट। अगर आपको कहीं भी ऐसा हम्म, फ़ील होता है कि यार आई कैन इम्प्रूव दिस प्रोसेस, लेट्स से राइट, you're booking a train, you're booking a flight, ठीक है? you're booking Careem, you're booking anything, कुछ भी कर रहे हो, लिटरली you're ordering food। सो अगर आपको ज़रा सा भी फील होता है कि आई कैन इम्प्रूव दिस एंड मुझे ये एक्सपीरियंस जो है ना सही नहीं लगा, सो हम्म, सिट ऑन द कैनवस एंड जस्ट ट्राई स्टार्ट पुटिंग थिंग्स डाउन, ठीक है? एनालाइज करो चीज़ें, रखते जाओ, लिखते जाओ, बेसिक्स पहले क्लियर करो, ठीक है? करने के बाद एंड देन जहाँ पर भी यू फील आई एम स्टक, सर्च। there are a lot of things that will come in front of you on the internet. Try to हम्म, apply them, learn कि ये इस चीज़ ने मेरे लिए काम किया या नहीं किया, is that beneficial for me or not, experiment and then move on. And honestly speaking, a lot of companies, either they don't give you time to experiment or else they don't encourage you to experiment. But over here, हम्म, one of the blessings that I had was to experiment things, and believe me, I messed up a lot of times. So इंटरेस्टिंग, you have to experiment to learn. So if you are not राइट, experimenting, you are actually not learning. So about the resources, I would say कि find your resources जिस चीज़ की प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है। Like let's say it does not mean कि एक स्टैटिक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये कहता है कि पहले वायरफ्रेम बनाओ, वायरफ्रेम बनाने के बाद यूआई बनाओ, यूआई बनाने के बाद प्रोटोटाइप बनाओ। ऐसे नहीं होता हर जगह पे, हर प्रॉब्लम या, पे ऐसे नहीं अप्लाई होता। सो हमेशा जो है वायरफ्रेम्स नहीं बनानी पड़ती। समटाइम्स यू हैव अ डिज़ाइन सिस्टम, समटाइम्स यू हैव अ डिज़ाइन, ठीक है? तो आप मिसगाइड हो जाओगे। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम फर्स्ट एंड जितना ज़्यादा टाइम लगा सकते हो थिंकिंग पे, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग पे, उतना ज़्यादा ट्राई करो कि आप वो चीज़ समझ रहे हो और उसके बाद just have a very small portion of time in implementing that. you talked about experiment, you talked about approaching the problems in a different way. Sada Pepe, I'd like to ask you about the research part in product design, especially क्योंकि I know कि जिस जर्नी से जितनी एक substantial जर्नी रही है for सादा पे, एक like it's a very unique product, आपकी customer base, आपकी growth, उसके अंदर एज अ डिज़ाइनर लाइक अगेन यूज़र रिसर्चर या यूएक्स रिसर्च का जो पार्ट है, वेयर डज दैट कम इनटू प्ले? As I said, it's been a long journey, ठीक है? Where मैं from that part जहाँ पे you don't know what you are actually building, ठीक है? You have a lot of ideas, you have a lot of stuff going on in your mind, but you don't know what will actually work in the market. सही है? You don't even know कि users accept करेंगे इस प्रोडक्ट को या नहीं, ठीक है? From that part to that part where you have lot of products, ठीक है? एक ही कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट फीचर्स हैं और अब जो है आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है? नाउ इवन अगर इफ यू आर सीइंग कि मैंने कोई न्यू फीचर डिज़ाइन करना है, न्यू फीचर इम्प्लीमेंट करना है, एट दैट पॉइंट रिसर्च फेज इज़ डिफरेंट और एज़ कंपेयर टू दैट पार्ट जहाँ पे यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट राइट नाउ। इवन इफ यू इफ यू रीड के आप प्रोडक्ट्स को कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे ढूंढते हैं, यू विल ऑलवेज रीड के फटाफट बनाओ और शिप करो, आइटरेट करो, शिप करो, आइटरेट करो शुरू में, टू अंडरस्टैंड कि या, मार्केट कैसी है, इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस रेट क्या है, हाउ आर यूजर्स ट्रीटिंग योर प्रोडक्ट, आर दे इवन एक्सेप्टिंग इट और नॉट, ठीक है? So the similar case was with us as well. In initial years, we did not do lot of research. अब वो research का राइट, क्या मतलब है? बहुत सारे इंटरव्यूज नहीं किए, बहुत सारे सर्वेज रन नहीं किए, इस तरह के काम नहीं किए। बट सही, ऐसा नहीं कि हमने रिसर्च नहीं की, वी डिड रिसर्च, डाटा रिसर्च हमने की, क्वांटिटेटिव रिसर्च की हमने, ठीक है? हमने जो है वी डिड सी के क्या चीज़ एग्जैक्टली बनानी चाहिए, किसकी एक्सेप्टेंस जल्दी होगी, वी डिड गेट दैट सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि समझ आ जाए राइट, कि यार बनाना क्या है एटलीस्ट। सो ठीक है, व्हेन वी रिलीज्ड इट, जब हमने बना लिया उसके बाद आपको जब डाटा भी आना शुरू हो जाता है, फीडबैक भी आना शुरू हो जाता है, यूजर खुद आपको बता रहा है आकर खुद आपके पास एप्लीकेशन में कि मुझे ये चाहिए, आप इस तरीके से चीज़ें चेंज करो। वी हैव अ फेसबुक कम्युनिटी एज वेल जहाँ पे हमारे यूजर्स आर एडिड, ठीक है? तो हमने ये स्टार्ट किया था शुरू में क्योंकि वी वांटेड टू गेट फीडबैक, अर्ली फीडबैक। तो जो भी यूज़र हम ऑन बोर्ड करते थे उसको हम फेसबुक की कम्युनिटी में ऐड कर देते थे। सो वो जो है ना, नाइस, दोज आर दोज फाउंडर फाउंडर क्लब के मेंबर्स
जो जिन्होंने एट दैट टाइम 10 इनवाइट्स की और फिर जो है ना हमें ज्वाइन किया, और दे आर काइंड हम्म ऑफ दोज काइंड ऑफ लॉयल यूजर्स जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं आपके पास खुद आके कि मुझे ये चीज़ हम्म चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ रिसर्च। इट्स नॉट कि ये राइट रिसर्च का बिल्कुल पार्ट नहीं, आप यूजर को सुन रहे हो, आप डाटा सुन रहे हो, आपको यूजर बहुत सारी जगहों से बता रहा है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। एंड देन नाउ हम्म फास्ट फॉरवर्ड टू एट दिस पॉइंट, एट प्रेजेंट पॉइंट, इफ हम्म वी फील लाइक कि ये मुझे समझ नहीं लग रही मैंने कैसे करना है, मुझे समझ नहीं लग रही क्या चीज़ वर्क करेगी, ए बी टेस्ट कर लो, हम्म फटाफट कोई चीज़ छोटी सी बना के जस्ट टेस्ट इट आउट, और डू सम यूजर इंटरव्यूज विच वी डू राइट नाउ, ठीक है। डू सम राइट यूजर इंटरव्यूज, आस्क देम कि भाई प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है, प्रोटोटाइप्स टेस्ट कर लो। तो राइट हम्म नाउ एट दिस स्टेज ऑफ द कंपनी, जहाँ पे कंपनी हैज ग्रोन, ठीक है, आपके पास मल्टीपल हम्म स्क्वाड्स हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई थिंग्स। यहाँ या पर वी हैव वेरी गुड, अब मैं ये कह सकता हूँ वी हैव वेरी गुड रिसर्च प्रोसेसेस एज वेल। ओके वी रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड a very unique and really nice thing, um, user research repository. So what we did is ओके that कि कोई भी स्क्वाड है, कोई भी ट्राइब है, कोई भी हम्म डिज़ाइनर है, एक नोशन की फाइल बनाई, आप इंटरव्यू करो यूज़र को, उस फाइल के अंदर ऐड कर दो। मैंने इस यूज़र का इंटरव्यू किया था, उस यूज़र ने मुझे ये कहा, और ये जो कह रहा है, इसकी समरी जो है इस स्क्वाड और इस स्क्वाड के साथ रिलेट हो रही है, और इस फीचर के साथ रिलेट हो रही है। So everyone is adding all that in that repository. So let's say after 6 months, you need something, and you can go back to that repository and read it out and get it. To me, research means understanding the problem, understanding the situation, understanding the issue. अगर वो राइट अंडरस्टैंडिंग आप क्वेश्चन पूछ के कर रहे हो, सर्वेज कर हम्म से कर रहे हो, इंटरव्यूज से कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, दैट्स इट, दैट्स रिसर्च बेसिकली। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कि ये मसला क्या है, किस चीज़ पर काम करना है, करना क्या है हमने। so let's move on to quick questions. What's your favorite book that you'd like to recommend to anybody? Could be anything. Um, Could be design related. Could be fiction. Could be anything. well, the recent that I have read is Inspired, Okay. बट आई डोंट हैव एनी फेवरेट बुक्स, क्योंकि मेरा डायलेमा थोड़ा सा ये है कि अगर आपकी फेवरेट बुक बन गई है, लाइक द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड, इट्स मीन दैट दैट्स योर बेंचमार्क। सो अगर आप उससे Yeah. बेहतर पढ़ते हो, देन यू मूव ऑन। सो Yeah. इट वेरीज के लास्ट मैंने क्या पढ़ी थी वो मुझे समझ आई, दैट्स द बेस्ट। सो Right. दैट्स व्हाट Right. आई थिंक, ये जो फेवरेट या बेस्ट है वो वही है कि जो लास्ट रिसेंट में आपके पास आई है। Okay. 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 Makes sense. Uh, favorite designer or design company? Well, it's not a design company. Can I name product companies as well? Because I have Yeah. Yeah. products that Definitely. are favorite. Definitely. I really love Wise and Ah. Revolut actually. Revolut की Yeah. especially उनका जो पुराना डिज़ाइन था, वो नया डिज़ाइन, they are still experimenting, but maybe that's favorite for a lot of other peoples, but I like the old one. Wise Okay. in the similar way, if अगर आप उनका पुराना डिज़ाइन देखें, the way they converted, they iterated Hmm. into what they have today, it's Yeah. remarkable, Yeah. and especially their True. processes. Any individual जिन्हें आप रेगुलरली फॉलो करते हो एज लाइक कुड बी अ प्रोडक्ट पर्सन कुड बी एनीवन एल्स Honestly, इतना टाइम होता नहीं है, but I like John Doe, which is John Doe. No one. So ओके ओके प्लेस yeah, होल्डर exactly. राइट एनी मीडिया दैट यू कंज्यूम that you'd like to recommend to other people. So I am one of those designers जो बहुत ज़्यादा design systems में interested है, and All right. I have also built around 3 to 4 major design systems. So I really All right. like, there's a channel called Design System London or something on YouTube. So I really follow ओके them and I really like their talks. अगर आप डिजाइनर ना होते तो आप क्या होते? That's clear, chef. I love to cook. ओह Yeah. अच्छा And इंटरेस्टिंग one day I hope I will have my own cafe or something as well. Because I have a connection between chef and designer as well. Designer मेरी नज़र में वो है जो अपना क्राफ्ट मिक्स अप करके रिमिक्स बना के चीज़ें बनाता है। नाइस आप ये देखें कि राइट दुनिया में कितने बेशुमार डिजाइनर्स हैं, एंड एवरीवन हैव देयर ओन यूनिक फ्लेवर्स, ठीक है, उनके या अपने या डिफरेंट डिजाइन हैं। सिमिलर वे
food is something where you can follow a recipe. आपने बिरयानी Hmm. बनानी है, कुछ भी बनाना है, you can follow a recipe, but still you can add a spark of your own as well, which can add That's different flavor. So that's where basically I decided I want to become a बहुत chef, if not a designer. बड़ा अच्छा आपने दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया. That's interesting to know, right? What is a design system? फिग्मा पे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं आमतौर पे डिज़ाइन सिस्टम्स की. Libraries are not a design system. That's what one thing I want to clear, and I'm very strict about that. They are just UI kits or reusable components. That's it. Design system वो है जो एक प्रोडक्ट के अंदर आप सिस्टम बना रहे हो. इसके नाम के अंदर खुद सिस्टम आ रहा है. You build a system which is a reusable system, which basically ease your processes, ease your operations. ठीक है? And it's not just on Figma. That's a misconception. आजकल तो द वर्ल्ड हैज मॉडर्नाइज्ड. अब तो फिग्मा के अंदर भी आपके पास टोकन्स आ गए हैं विच यू कैन कनेक्ट एंड ऑल दैट. अब तो इफ यू एक्सप्लोर फ्रेमर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डिजाइन सिस्टम, और वो बहुत राइट. स्ट्रिक्टली बेस्ड है वेब के डिज़ाइन सिस्टम के साथ. वो आपको डिफरेंट टाइपोग्राफी भी ऐसे जो है ना ऐड नहीं करने देता स्ट्रक्चर से. इट एजुकेट्स यू दैट कि क्या चीज़ वेब के लिए है क्या नहीं है. ठीक है. सो राइट. राइट. डिज़ाइन सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. जो प्रिंसिपल्स एक दफ़ा आप लिख देते हो कि दिस इज़ व्हाट वी वांट टू बिल्ड, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू हैव, एंड देन यू गिव अ लिस्ट ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स जो आपकी ऑपरेशंस ईज़ कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान कर देते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड दैट के प्रोडक्ट डिज़ाइनर की लाइफ में हमारे यहाँ पे ना सिर्फ 30% और 20% यूआई बनाना है. बिकॉज दे आर या. जस्ट रीयूजिंग दोज कंपोनेंट्स ओनली. या. आई या. थिंक वेरी रेयरली it's क्या कहते हैं केस वेयर वी गेट an opportunity to be more creative. But that does ओके. not mean कि design system आपको restrict करता है. That's a bit of a con, but it does not restrict you still. And one more thing I want to add. Over here at SadaPay, we have achieved the tokens ka part. Before Figma launched the tokens, we already were able to connect our tokens with Figma to Android and iOS. So whatever you see on Figma, it's actually exactly same on iOS and Android, which ओके. helps us कि मैं अगर पीच को रेड कर दूं, ब्लू कर दूं, और मैं फिग्मा पे कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली जो है ना वो पास ऑन हो जाता है iOS पे भी, एंड्रॉइड पे भी, एंड देन द डेवलपर जस्ट हैज टू एक्सेप्ट इट. दैट्स इट. ओके. वाओ, So they are दैट्स converted इम्प्रेसिव. into tokens, and tokens converted into JSON, and that's how it's translated. And ओके. we have that's how we have built the whole operation. All right. All right. And for people who want to learn about design systems, you've already recommended the channel, correct? Airbnb. Yes, I have, but Airbnb, go watch podcasts about design system by Airbnb designers or by Atlassian designers. And All there's right. a video on tokens by Atlassian ke developer and designer who are actually Okay. explaining how to use those tokens and convert them into your code. थैंक यू सो मच बासित, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी इनपुट ली. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू बी हेयर and looking forward to having another episode with you maybe in the future. Inshallah, thank you so much, and it's a really nice platform that you have started. And वो Thank एक, you. in the start you just need that push, and I hope that you have already gotten that. And this industry in Pakistan really needs a push. I feel like Yeah. कि हमारे यहाँ पे बहुत skilled and expert लोग हैं, but they are not right on the stage. They are Yeah. behind the covers, and they're doing magnificent work, which I believe this such kind of platforms can bring them in front, and other designers, juniors, and other people who wants to be a designer can actually understand के real दुनिया क्या है design की, actual में होता क्या है. True. It's not Yeah. again all visuals and pretty screens. बिल्कुल, बिल्कुल, exactly. So on that note, let's end this conversation. So Thank you so take much. care.